Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 11th April 2023. Some of the important news which we are going to discuss और जो important है आपके एग्जाम के लिए भी. The first is Vibrant Village program that we are going to discuss. The next thing which we are going to discuss is about NATO. So we know that Finland has become the 31st member of NATO. So we are going to discuss the history of Finland in an editorial and the explainer series, as well as about the NATO, which are important for your exam. Then we will also discuss about the El-Nino. Okay. So what is El-Nino exactly? What is the difference between El-Nino and La Nina? So we are going to discuss that thing also in this article. So let's start with the news. The first is India's borders are safe, can't be violated, says Amit Shah. So यहाँ पे अमित शाह he had visited a village in Arunachal Pradesh. That name of that village is PB2 in Arunachal Pradesh, Anjor district. So this district is very important, this village, because it shares border with two countries, that is China and Myanmar. So if you will see the northeastern states, so Arunachal Pradesh जो है, so it shares border with both the countries, China and Myanmar, and Nagaland, Manipur, Mizoram, they share border with Mizoram. सो विद म्यांमार. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें देखना चाहिए, दैट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड एज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका जो आउटले है वो है ₹48,000 करोड़, एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ विलेजेस? सो 2967 विलेजेस across 19 districts in 4 border states. Now these 4 border states and 1 union territory. तो जो 4 बॉर्डर स्टेट्स हैं ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. इसमें से अगर आप देखेंगे 4800 करोड़ में से जो मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो है फॉर रोड कनेक्टिविटी. ओके, सो दैट इज द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम. द सेकेंड थिंग इज दैट आफ्टर रोड कनेक्टिविटी it also focuses on health, education, then tourism, then connectivity, that is mobile connectivity and internet connectivity. Okay, so health, education, tourism, connectivity, drinking water. ठीक है. अब इसमें जो अगर आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज इन दिस बॉर्डर स्टेट्स. तो एक तो बेसिक फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे. तो ये बेसिक फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है फॉर पीपल हु आर लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज, दैट विल इम्प्रूव. सो दिस बेसिक फैसिलिटीज विल इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, and in next step it will stop the out migration of people from these villages, out migration. And then if the out migration is stopped and local people are living, so it will improve the border security in this area. So that is the objective of this vibrant village program. Now if you will see that China has protested against this. China's foreign ministry has said that it violates its sovereignty. Now why China is saying that? So we will see that this is a China point of view, it is a disputed territory. China lays claim over certain places in Arunachal Pradesh, especially Tawang. तो यहाँ पे कुछ दिन पहले जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में 11 प्लेसेस का नाम जो है वो चेंज किया था. ओके, सो टू ले क्लेम ऑन द एंटायर स्टेट, दैट इज एंटायर अरुणाचल प्रदेश. सो दैट्स व्हाई चाइना हैज सेड दैट इट वायलेट्स चाइना's sovereignty. दैट इज विजिटिंग ऑफ मिनिस्टर इन अरुणाचल प्रदेश, इट वायलेट्स चाइना's sovereignty. इसके बाद अगर आप देखेंगे, so we have ITBP over here. What is ITBP? It is Indo-Tibetan Border Police. So Indo-Tibetan Border Police, it guards the India-China border. The next is drill test India's COVID-19 preparedness. So India has begun a 2-day COVID-19 preparedness drill amid the surging cases of COVID-19. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज अबाउट द वेरिएंट. द वेरिएंट which has emerged as the dominant variant in India. So that is XBB.1.16. So it is the recombinant variant of Omicron.
सो XBB जो होता है उसके बहुत सारे लीनिएज है, उसका एक जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है दैट इज XBB.1.16। उसके बाद इंडिया में XBB.1.16 का एक नया ऑफशूट सब टाइप डिटेक्ट हुआ है दैट इज XBB.1.16.1। The next is state news. The Supreme Court says how can LG act without the aid and advice of the Council of Ministers. So यहाँ पे the Supreme Court has put the question that how can the Lieutenant Governor of Delhi act without the aid and advice of the Council of Ministers in nominating members to the Municipal Corporation of Delhi. Okay, so यहाँ पे जो Supreme Court ने जो कहा है that the ASG argued that the GNCTD Act, that is the Government of National Capital Territory Act, had been amended after the 2018 judgment by a constitution bench which held that the LG should act as per the aid and advice of the Council of Ministers. तो जो दिल्ली को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है that it has its own legislative assembly that has been provided under Article 239AA of the Constitution. अब अपने एक इम्पोर्टेंट न्यूज पे आते हैं दैट इज तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ओकेज री एडॉप्टेड बिल अगेंस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इस बिल को रिटर्न कर दिया गया था बट नाउ द एसेंट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नर। द नेम ऑफ द बिल इज तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। इस बिल का एम क्या है? टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग। ओके, सो यहाँ पे है जो बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग विच हैज बीन क्लेमिंग लाइव्स इन द स्टेट। द नेक्स्ट इज नाटो, फिनलैंड जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो। ओके, तो यहाँ पे जो फिनलैंड है जो जाना जाता था कि वर्ल्ड वॉर टू, सिंस वर्ल्ड वॉर टू फिनलैंड इज अ न्यूट्रल कंट्री। ओके, नाउ it has given up that neutrality and now it has become the 31st member of NATO. Okay, so before going to the history of how Finland became from neutral country to joining NATO, let's have some basics of NATO. तो NATO का यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, that is the full form of NATO. NATO it was established by North Atlantic Treaty in 1949. उसके बाद जो NATO है it is a collective defense treaty. It is a collective defense treaty. And then the headquarter of NATO it is in Brussels in Belgium. Brussels in Belgium. Then the Secretary General of NATO is Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg. Okay, so these are some of the important points about the NATO which you should know. Now, फिनलैंड के बारे में किस कंट्री को प्रॉब्लम था लास्ट तक फिनलैंड के मेंबरशिप से? So that was Turkey. So after the ratification of Finland inclusion in NATO by Turkey Parliament, Finland officially joined NATO. So that was related to Kurdish terrorists. So Turkey had said that Finland and Sweden should take action against the Kurdish terrorists in that country. So when Finland gave the assurances, and then the Turkey ratified the accession of NATO. Now, if you will see that what benefit it gives to NATO if Finland becomes the member of NATO. तो अगर आप देखेंगे जो फिनलैंड है, it has 1,340 kilometer border with Russia. Okay. So now what happens for NATO is that now NATO gets an additional point against Russia. That now 1,340 किलोमीटर जो है वो वहाँ पे अब NATO का एक्सपेंशन हो चुका है। Fine. Second is what benefit it gives to Finland. So Finland has joined NATO especially after the Russia-Ukraine crisis. Then coming to this third paragraph. So Finland is certainly not the first and will not be the last neighbor of Russia to join the alliance. ओके, तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रशियन नेबर्स हैं हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड नाटो. सो इफ यू विल सी नॉर्वे, इट ज्वाइंड नाटो इन 1949 एंड इट इज अ फाउंडिंग मेंबर. ओके, नाटो जब बना था 1949 में तब उसके पास 12 मेंबर्स थे. नाउ द टोटल मेंबरशिप इज 31. उसके बाद लैटविया became the member in 2004, एस्टोनिया became the member in 2004, then Poland became the member in 1999 and Lithuania became the member in 2004. उसके बाद if you will see the history of Finland.
So for nearly 200 years, if you will see the relationship between Finland and Russia, it has been a combination of struggle and compromise. So it all starts in 1809. So 1809 में जो Russian Tsar थे Alexander I, he defeats Sweden and he makes Sweden as the Grand Duchy of the Russian Empire. उसके बाद 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ which replaced the Tsarist regime with Bolshevik regime. ओके एंड देन इट पेव्ड द वे फॉर द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ फिनलैंड. उसके बाद फिनलैंड जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया. आफ्टर दैट इफ यू विल सी दैट देयर वर टू फिनिश सोवियत वॉर, ओके, बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स. सो नाउ दैट वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टुडेज सिनेरियो. ओके, अब देखिए यहाँ से पूरा प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होता है. दैट इज इन अक्टूबर 1939 स्टालिन प्रपोज्ड ए रिवीजन ऑफ द फिनिश रशियन बॉर्डर. सो वंस अगेन स्टार्टिंग द कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद एक महीने के बाद सोवियत यूनियन अटैक फिनलैंड, ओके, एंड अंडर वेरियस प्रेटेक्स्ट, एंड दैट वॉर इज कॉल्ड एज द विंटर वॉर ऑफ 1939-1940 विच लास्टेड फॉर 3.5 months. इसमें क्या हुआ कि फिनलैंड ने अपने इंडिपेंडेंस तो बचा ली बट बहुत सारे एरियाज जो है उसको खो दिया. देन द सेकेंड वॉर स्टार्टेड इन 1941, ओके, which was supported by the Finnish alliance with the Third Reich. So Finland had been defeated but was able to avoid enemy occupation. तो ये दो वॉर जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट थे जूहो कुस्ती पैसिविकी, so he went on to sign an agreement in 1948 with the USSR. That agreement is called as the Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between USSR and Finland. So this started the era of Finland's neutrality, where the president aimed to make Finland neutral and not to allow any Western countries to use Finland as a base against USSR. Right? The next is कि जो फिनलैंड का एसोसिएशन है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ओके, और या नाटो के साथ, वो काफ़ी पुराना है. सो इफ यू विल सी दैट कोऑपरेशन बिटवीन फिनलैंड एंड नाटो, इट बिगेन एज अर्ली एज इन 1994 विद द पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम. देन फिनलैंड ऑलरेडी हैड अ स्टेटस ऑफ एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टू नाटो ऑपरेशंस इन 3 countries. दोज 3 countries आर बाल्कन्स, अफगानिस्तान एंड इराक. उसके बाद if you will see that according to the constitution of Finland, every Finnish citizen is obligated to participate in national defense. Okay, so अगर आप देखेंगे कि नाटो का मेंबरशिप बनने के पहले ही फिनलैंड वाज प्रिपेयरिंग टू डिफेंड इटसेल्फ. ओके, अब अगर हम देखें कि व्हाई फिनलैंड हैज जॉइंड नाटो, सो दैट इज फॉर एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी ऑफर्ड बाय नाटो. क्योंकि एक जगह तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल ही रहा है, which has raised concern in the countries which shares border with Russia. So Finland को एक additional security guarantee चाहिए थी. That's why it has joined NATO. That additional security guarantee is given by Article 5 of the NATO. जो Article 5 है, it is the heart of the NATO, which says that if any country is attacked, so it will be considered as attack on all the members of NATO. So that हम जो कहते हैं कि that NATO is a collective defense treaty, that Article 5 defines it as a collective defense treaty. उसके साथ साथ now what is the responsibility of NATO and Russia? So see, the author says that NATO and Russia should reach for ways out of the constant cycle of implementing measures and imposing countermeasures. Okay. तो यहाँ पे ये है कि that both Russia and NATO should exercise cautious behavior with each other. The next is that is the newly elected center-right government in Finland should not exaggerate the potential threats from Russia but engage in bilateral dialogue trying to understand the security concerns of each other country. So that is the only way out for de-escalating the tension in Europe. The next article is Burning Bright. So this is about Project Tiger. Okay, so Project Tiger, it was launched in 1973. Now it has completed 50 years. Okay, now within this 50 years, if you will see, so India has made a remarkable progress in protection of tigers. तो अब आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट एस्टिमेशन आया है, द 5th cycle of all India tiger estimation, it has said that the tiger population in India is at least 3,167 cats, means tiger.
In 2018 the number was 2967. So now India जो है it hosts 75% of global tiger population in the world. Fine, that is very important number. Then if we will see that there is the status of tiger report, it warns that all of India's 5 main tiger zones, okay, they face challenges such as deforestation and loss of tiger habitat. तो जैसा कि कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स में जो है वो जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो घटा हुआ है. जैसे कि in 2018 there were 871 unique tigers which were photographed, but this time it is only 824. The next is that when the project Tiger was launched, so we had 9 tiger reserves in India. Today the total number of tiger reserves in India are 53. But if we will see that tiger population recovery is poor in certain states. Those states are like Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh. Some of the reasons for the declining tiger population in these states are habitat encroachment, hunting, conflicts with humans, unregulated grazing, excessive harvesting of non-timber forest products, fires, mining and expanding the infrastructure in these forest areas. Then coming to one important news that is called as International Big Cat Alliance. International Big Cat Alliance. So International Big Cat Alliance, it was launched on the occasion of 50th anniversary of Project Tiger. It seeks to curb poaching and illegal trade in Asia in big cats which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, puma, jaguar. Now the next important article is a crucial 6 month for India-US ties. So here we are going to take the stock of India-US ties. So let me tell you that 3 things are important here to understand. One is G20, which is India is the president this year. Then we have Quad, where 4 countries are members. And then we have I2U2, which is also known as Quad, new Quad. And the members here are UAE, USA, Israel and India. Okay, so it is a new economic quad for Middle East. Then this quad, it is for Indo-Pacific region. Here the countries those are members are Japan, Australia, India and USA. So if you will see that in Quad and I2U2, India and USA, they are the common members. Now coming about the divergence and convergence between India and USA. तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या है, ठीक है, यूक्रेन इशू, इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन इशू. सो इंडिया वांट्स, यूएसए वांट्स इंडिया टू डू मोर ऑन यूक्रेन इशू. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट रिसेंटली अ न्यू पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू इंडिया, दैट इज गारशेट्टी. सो एरिक गारशेट्टी, ही इज द न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर टू इंडिया. ओके, देन व्हाट इज कन्वर्जेंस, ठीक है ना. इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे तो कन्वर्जेंस भी बहुत सारे हैं. डाइवर्जेंस तो है यूक्रेन इशू पे, पर कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ पे है. एक तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेके है जहाँ पे चाइना को कंटेन करना है. सेकेंड इज द इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच वॉज लॉन्च इन 2022. सो इट इज गोइंग टू एक्सपैंड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी and defense industrial cooperation between the 2 countries. The second arena where they cooperate is Indo-Pacific. Okay, so where both the countries are members of the Quad. So यहाँ पे दोनों का जो vision है वो same है, that is free, open and inclusive Indo-Pacific region that is respectful of sovereignty and territorial integrity of all countries. इसके साथ साथ जब आप Quad का देखते हो arena, so it is not limited to only containing the rise of China, but it also includes joint military exercise, information sharing on security issues, collaboration on economic and infrastructure development programs, and then new area of cooperations like counter-terrorism, cyber security and maritime security. Then the next is diversifying supply chain away from China. Okay, तो यहाँ पे इंडिया कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज यूएस बिजनेसेस दे आर लुकिंग टू एक्सपांड देयर कस्टमर बेस एंड इंडिया हैज़ रिलेटिवली लो कॉस्ट लेबर फोर्स एंड अबंडेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन सेक्टर्स सच एज आईटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग. बट यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि
infrastructure, logistics, and regulatory systems in India are not as well developed as those in China. And second, India has a complex legal and bureaucratic system. But the both countries are also trying to resolve it by promoting closer economic ties and investment. Okay. So यहाँ पे एक इनिशिएटिव जो दोनों कंट्रीज ने जो लॉन्च किया है, दैट इज यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक partnership, which was launched in 2020 to enhance cooperation in areas such as energy security, access, and climate change. Then about the diasporas. So Indian Americans, they are the most successful immigrants in the US, and India needs the knowledge, skill, and investment of the diaspora to regain its global position. Then if we will see that US in past has helped India in Green Revolution, which made India from net importer to net exporter of food. Then US has also played a key role in making India an IT superpower. Then they both countries, they are partners in combating the climate change. They are promoting projects in renewable energy, joint research and development projects, and investment in renewable energy infrastructure. Then the next important thing is what has happened with Afghanistan. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे that US has not always lent support to India and has instead pivoted to supporting Pakistan. Second is जब से Americans they have pulled out from Afghanistan, that does not inspire confidence in the US as a trusted partner. The second thing is from India point of view that US has been flagging issues related to terrorism, human rights, and democracy in India. So these are certain challenges and certain opportunities in India-US ties. Now coming to the article again on Finland's journey to join NATO. So we have done most of the thing over there. We will just try to take other important things which has been highlighted in this article. So if you will see that जो हमने फर्स्ट सोवियत फिनिश वॉर की बात की थी, तो यहाँ पे जो रशिया था, इट वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ बफर जोन अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर, क्योंकि रशिया की हिस्ट्री रही है कि जब भी रशिया के ऊपर अटैक हुआ है वो फिनलैंड के थ्रू ही हुआ है. उसके बाद टेंशन ड्यू टू रशियन रेवोल्यूशन, फिनिश सिविल वॉर बिटवीन 1917 एंड 1918 एंड अनरिजॉल्व्ड इशू फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ डॉरपाट इन 1920, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट सोवियत फिनिश वॉर. उसके बाद इफ यू विल सी दैट second Soviet Finnish war हुआ, which was between 1941 and 44, where Finland was defeated and it lost its territory. And then the independence process in Finland in 1917, then the civil war, then the Lapland war in 1944. It has all impacted the psychology of Finland people. तो यहाँ पे जो फिनलैंड है वो क्या ensure करता है कि to balance its autonomy with the need for military cooperation with the West. But it was very careful कि वो ऐसे एक्शंस ना ले जो मॉस्को के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए. दैट्स वाई दे साइंड अ फिनो-सोवियत ट्रीटी ऑफ 1948 which allowed Finland to remain neutral and not to allow any foreign troops on its soil without the permission from Moscow. Fine. So इससे फिनलैंड का जो सोवियत यूनियन का ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, बट फिनलैंड बिकेम हैवीली डिपेंडेंट ऑन सोवियत यूनियन. आफ्टर दैट इफ यू विल सी दैट जो पैसिकेवीज हैं उनका जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के कोस्ती पैसिकेवी, ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद सोवियत यूनियन, जहाँ पे न्यूट्रलिटी विल बी द कॉर्नर स्टोन. तो जो न्यूट्रलिटी जो फिनलैंड की आती है वो यहाँ से आती है, फिनो सोवियत ट्रीटी ऑफ 1948. बट डेफिनेटली नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके. And now we will see that country Finland, it is an active participant in European security initiatives such as common security and defense policy and Nordic defense cooperation. Okay, but if you will see that in the background of Russia-Ukraine crisis, now Finland has joined the NATO. Now coming to recent weather events affected wheat crop. तो जैसे कि हम जानते हैं कि because of the rain, so wheat output is going to be impacted. So according to AgriWatch, an agri commodity research firm, it has stated that untimely rains की वजह से क्या होगा, that the wheat production in the agriculture year is likely to be 102.9 metric ton, which is less than the union government estimate of 112 metric ton. तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि the wheat output will be 112 metric ton because of increased area under cultivation of wheat and better yield this season. अब ये जो अनसीजनल रेन है ये किस वजह से हुआ है? सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एल नीनो. ठीक है, एल नीनो.
एल नीनो जिसको हम कहते हैं स्पेनिश में लिटिल बॉय, ला नीना को हम क्या कहते हैं, लिटिल गर्ल। ठीक है, एल नीनो इट इज एसोसिएटेड विद ड्राई कंडीशंस और ड्राउट कंडीशंस इन इंडिया, मीन्स लेस रेनफॉल इन इंडिया, एंड ला नीना इज एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एल नीनो ला नीना कंडीशंस हैं दे डेवलप इन सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। सो हियर यू हैव साउथ अमेरिकन कोस्ट, okay, so normally the South American coast, the western side of South American coast is cold, but if it certain years it becomes warm because of weakening of trade winds, so that gives rise to El Nino. But if the trade winds get strengthened, so the condition becomes more colder and that gives rise to La Nina. Now the next important news is Nirmala Sitharaman in Washington to attend IMF World Bank meetings. So यहाँ पे if you will see that first is G20 finance ministers and central bank governors meeting, which will be attended by Nirmala Sitharaman and Shaktikanta Das, who is the governor of RBI. Followed by that will be the meeting with Treasury Secretary Janet Yellen of USA. Now जो G20 मीटिंग जो है वो किस पे फोकस करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, फाइनेंशियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, अब जो लास्ट मीटिंग थी FMCBG का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, इट वाज हेल्ड इन बेंगलोर। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पे कोई जॉइंट कम्युनिक रिलीज नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ वर्डिंग्स ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। Okay, so then India had to issue the chair's summary and outcome document rather than a joint communique. After that, if you will see that Ms. Sitharaman, who is in Washington DC, she is going to attend IMF Finance Committee meeting and World Bank's Development Committee meeting, which is the highest decision-making bodies of this organization. Then there are certain names which are important from the exam point of view. So, who is India's ambassador to US? Taranjit Sandhu. Then who is the India's newly nominated executive director at the World Bank? Then Parameswaran Iyer, who was formerly the CEO of Niti Aayog. And who is the executive director at IMF? That the name is Krishnamurthy Subramaniam, who was formerly chief economic advisor of India. The next important news is discussed shooting down of Chinese spy balloon with India, says American general. So यहाँ पे इंडिया का एक एयर एक्सरसाइज है यूएस के साथ जिसका नाम है कोप इंडिया 2023. Okay, तो यहाँ पे if you will see, now we are discussing here about the Chinese spy balloon which was shot down by USA in South Carolina. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो USA AF Air Force F-22 shot down a Chinese spy balloon off the coast of South Carolina. ये जो spy balloon आया था, okay, it traveled across North America for several days. देन इंडिया में भी स्पाई बलून साइट आउट किया गया है, एक इंसिडेंट देखा गया है कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। द नेक्स्ट इज एफर्ट्स ऑन टू ओपन जोजिला टनल अहेड ऑफ डेडलाइन। सो जोजिला टनल जो है ये जो दो रीजन को कनेक्ट करता है, दैट इज कश्मीर विद लद्दाख। ठीक है, इट इज अराउंड एट द हाइट ऑफ मोर देन 11,000 feet and it is a single tube two-way tunnel. The next from the foreign page, which is very important news for us, is China military ready to fight after exercises near Taiwan. So China has conducted a drill near Taiwan. So the drill was about how they will cut off Taiwan from help from other countries. तो यहाँ पे जो idea है वो यही है कि ताइवान को कैसे हम cut off कर सकते हैं. So China has conducted a 3 days exercise. The next is as the Ukraine war grinds on, Russia India seeks ways to keep defense trade afloat. तो यहाँ पे अगर आप जैसे जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से रशिया के अगेंस्ट काफी सारे सैंक्शंस हो गए हैं। एक सैंक्शंस जो है दैट रशिया हैज बीन केप्ट आउट ऑफ स्विफ्ट सिस्टम, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. So because of that, now the trade cannot take place in dollar. So India and Russia now they are looking for alternatives for making payments. तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे जो डिफेंस के जो हमारे डील्स हैं वो रुके पड़े हैं. सो सम ऑफ दैट इज S-400 सिस्टम विच इज ओवर हियर विच इंडिया इज बाइंग फ्रॉम रशिया. द डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम दैट हैज बीन स्टॉप्ड.
Then if you will see certain other system, project 11356 frigates, then modernization of Sukhoi Su-30 MKI and upgrade of MiG-29S. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.